Hello students, welcome to the Art Square. First of all, I want to give a huge thanks to all of you because of only because of you, tuma manako pai, apan manako pai, we get 100 plus students in our online platform. Amo jo online class chalchi YouTube re to ame video charu demo video as well as our online class chalchi with the help of Google Meet. Amar 100 plus students he galani. तो गोटे पिलरे बिफोर I'll what start the chapter symbolic logic. Today I'll start the chapter symbolic logic. I'll give a demo video in YouTube, and before starting that, an important announcement for all of you कि from December 1 2020 we are hoping to start a what new session in logic only. In logic रे गोटे सेशन हमर स्टार्ट हबो. लॉजिक रो केवल गोटे बैच स्टार्ट हबो, राइट. वीकली 4 क्लासेस तमर रहउची from the beginning to end, from the first chapter, entire course, right, from the beginning to end. I repeat, entire course of logic will be finished. Doubt clearing classes are there. Okay, weekly 4 classes आमे रखुछु plus 1 exam है. तो पिले रे Google Meet रे ही आमे क्लास करिवो. ए क्लासेस ता Google Meet रे करिवो plus 2 सेकंड ईयर पई काउंसिल एग्जाम पई. ब्रीफली आमे 3 मास आखिरे रखिछु, डिसेंबर जनवरी फेब्रुआरी. ए 3 मास भितरे आमे पूरा कवर करबो, पूरा कोर्स ता कवर करिवो, राइट हला. लॉजिक रही पूरा कोर्स ता कवर करिबा, राइट. सबु फंडास क्लियर करिबा, एग्जामिनेशन करिबा, किछि भी डाउट्स थले आमे क्लियर करिबा, राइट. तो ए माने कोन क्लासेस रो ए जो तमरो प्रोग्राम ता रहिछि तार आमे पैकेज रखिछु ओनली 3000 रुपीस पिले रे. इट इज वेरी व्हाट यू कैन से इट इज वेरी इफेक्टिव. ओके, कॉस्ट इफेक्टिव, बेसी कॉस्ट भी नहीं, रुपीस ओनली 3000, राइट. बहुत कुछ ही खर्च हो जाउछि, चारियाडे कर जाउछि, बट लॉजिक रे आउट ऑफ 100 90 स्कोर करिबाटा गारंटेड. आई एम गिविंग यू ए गारंटी जे तमे जदी फंडा क्लियर हे जाउछो देन यू विल स्कोर डेफिनेटली 90 प्लस इन लॉजिक, राइट. सो 3000 rupees, it is a very small amount, right. In this 3000 rupees will give you coaching from December, January, February. जदि एग्जाम एक्सटेंड होची मार्च जनरली हेइ थे अप टू द लास्ट ऑफ एग्जामिनेशन वी प्रोवाइड ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज, राइट. विल प्रोवाइड यू नोट्स. देन जदि इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लस 2 सेकंड ईयर आर्ट्स पिला माने इफ यू आर इंटरेस्टेड टू व्हाट क्लियर ऑल ऑफ योर लॉजिक डाउट्स, पूरा लॉजिक रे तमे जदि पूरा फंडा क्लियर होबा को चाहौछ देन प्लीज जॉइन अस. ओके, गूगल मीट रे हमर क्लास होबो, राइट हला. आउ यार पैकेज ता मु आई रिपीट जे 3000 टंगा हमर रहउची 3000 रुपीस हला. डोंट वरी अबाउट द मनी, बुझ पड़छ नै, पैसा आसुची जाउची, बुझ पड़छ ना. सर्टिफिकेट रे 90 प्लस लाइफ टाइम पे रहइबो, राइट हला. एंड व्हाट इफ यू वांट टू जॉइन द व्हाट classes in Google Meet then please contact to Sam को तमे कांटेक्ट करिया पड़िबो हला. देन ताको नंबर 9090768267 9090768267 तमे कांटेक्ट करिवो हला. बुझ पड़छ नै. यू कैन आल्सो कांटेक्ट मी 82498 44231 82498 44231 myself Nitin sir, राइट हला. अच्छा, डिसेंबर 1 रो पिले जॉइन होची हला, स्टार्ट होची. तो लॉजिक रो ब्रीफ सिलेबस, लॉजिक रो प्लस 2 सेकंड ईयर फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड आमे आउ थोड़े स्टार्ट करूछु, राइट हला. आ जो माने रही जाइछो बुझी पड़ना हो, सो मेनी रिक्वेस्ट आसुची, बुझ पड़छो तो देन प्लीज जॉइन अस. जार पैकेज रे आमे प्राइस रखुछु ओनली 3000 रुपीस. 3000 रुपीस रे लॉजिक रो सब प्रकार रो तमे फैसिलिटीज पाई परियो फ्रॉम द बिगिनिंग. आई रिपीट, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, जहां भी तमरो इतर मेंशन हेची सिलेबस रे, राइट हला. अच्छा, तो टुडे वी विल स्टार्ट symbolic logic. Today we will start symbolic logic, right हला. तो logic in terms of what? Now symbols is what? Symbolic logic. Basically
आमे जहाँ लॉजिक पढ़ंती बुझ पड़छनी व्हाट एवर वी हैव स्टडीड इन लॉजिक दोज आर व्हाट ना सेगुडा हला ट्रेडिशनल लॉजिक सेगुडा सब कोन ना दे आर ट्रेडिशनल लॉजिक हला दे आर ट्रेडिशनल लॉजिक which was invented or discovered, which was what, who is the founder of traditional logic na Aristotle traditional logic पर symbolic logic रे आमे कोन करिबा ना for the sake of simplicity आमे कोन करिबा ना symbols introduce करिबा हला एठी will give symbols okay in replace of certain propositions certain what terms बुझ पड़छ नै आमे symbols use करिबा like we can give examples like all students are studious. Suppose one example is what all students are studious all students are studious Satyabrata is a student Satyabrata is a student so Satyabrat is studious हला तो एटा को मिनिमाइज करिबा पई we can give what example symbols like all m is p s is m s is p right hala so in replace of students we put the symbol m in replace of what in the place of studious we replace p hala then in place of Satyabrat we replace what s hala बुझ पड़छ नै to minimize our task it is what the basic purpose of symbolic logic is to minimize our task right hala so spm tame use kar paribo you can use anything right hala this spm they are what they are variables okay in this regards these are what na ए जो variables गुडाक hala these variables they are used to represent a proposition these variables are used to represent propositions hala all m is p m p एगुडा को सब hala so these variables m what do you mean by variables then variables are what variables का को कहा जाय those who can vary they are known as variables जे vary करि परिबो they are known as variables जहार वैल्यू टा vary हेइ परिबो vary means what vary refers to change vary v a r y I repeat vary v a r y vary refers to change जो वैल्यू टा change हेइ परिबो बा vary करि परिबो they are known as variables so m p s एगुडा सब variables why because m refers to students तमे m refers to students ए केस नै छ m refers to what ना टीचर नै परिबो m राम को रेफर कर परिबो m sam को रेफर कर परिबो so the value of m can be changed as per the situations as per the requirements बुझ पड़छ नै तमे चेंज कर परिबो हला m रो वैल्यू टा तमे चेंज कर परिबो so all students are studious Satyabrata is a studious in replace of this word na students studious Satyabrata we used m p s right हला एगुडा सब हमें यूज करछनी तो दिस s p m एगुडा को सब s p m एगुडा सब हमें कोन कहि परियो पिले रे these are what एगुडा सब गोटे कोन पिले रे ना propositional variables these are what propositional variables because these variables are used to what show the propositions है ना these variables are used to show the propositions all students are studious या बदले हम यूज करछनी all m is p है ना right so that's why these variables are what they are known as what ना propositional variables है ना you can what simply represent these propositional variables एटी तो m p s एगुडा सब गोटे टर्म पई रिप्रेजेंट हला m p s एगुडा सब गोटे टर्म पई रिप्रेजेंट होची suppose you can entire proposition पई भी तमे रिप्रेजेंट कर परिबो p q r हला
एगुड़ा सब रिप्रेजेंट कर परिबो these are what ना these are variables बुझ पड़छ नै these are what ना these are variables हला सो p refers to entire proposition पई भी हमें रेफर कर परिबा हला सपोज देखो पिले एंटायर प्रोपोजिशन पई भी हम रेफर कर परिबा सेही पर्टिकुलर केस रे एटा गोटे गोटे टर्म पई रिप्रेजेंट होतला एस पी एम गोटे गोटे टर्म पई माइनर टर्म मेजर टर्म मिडिल टर्म हला तमे पढी छ ऑलरेडी सिलोजिज्म चैप्टर रे बट इन फॉर द एंटायर प्रोपोजिशन यू कैन आल्सो यूज ए व्हाट ना वेरिएबल सपोज p को तमे गोटे वेरिएबल दे परिबो सपोज all cows are four-legged animals. All cows are four-legged animals. Hala. So P refers to what? All cows are four-legged animals. Which portion? Like Q. Hala. You can give the example what? Now all men are mortal. हाला. So simply clear ये जो P Q R S T you can use these letters basically a small p small q small r small s ए वर्ड गुडा के यूज हुए ए गुडा को तमे गोटे गोटे प्रपोजिशन पई रिप्रेजेंट कर परिबो गोटे गोटे प्रपोजिशन पई एटा को रिप्रेजेंट कर परिबो प्रपोजिशन कोन हला व्हाट डू मीन बाय प्रपोजिशंस यू हैव टू सी माय प्रीवियस वीडियोस मु सेटे कहि छी जे व्हाट डू मीन बाय प्रपोजिशंस फिर भी मु कहि दोची रिकैप पटे कर दोची जे sentences having a truth value is known as what propositions right hala so entire propositions by all cows are four-legged animals we represent a single variable p so p refers to what p refers to all cows are what four-legged animals right so these are known as what so that's why as these variables are used as these variables are used to represent what now one proposition gote proposition को represent करूचंती that's why they are known as what they are known as propositional variables सेगुडा को कोन कहा जाय पिले रे propositional variable कहा जाय बुझ पड़छ नै हला अच्छा नेक्स्ट असला पिले रे logical constants हला logical constants नेक्स्ट गोटे कांसेप्ट हला बुझ पड़छ नै symbolic logic रे दीटा जिंस तमे मन रखियो very important one is propositional variable another one is logical constants right hala logical constants logical constants एथरे कोन आसुची पिले रे ना the literally meaning of constant अच्छा constant जार वैल्यू टा केबे चेंज होएनी variables रो ऑपोजिट होची कोन पिले रे constant definitely the opposite of variable is what constant बुझ पड़छ नै तो ए सेंस रे logical constants are symbols whose meaning always remain the same even though the what simply logical constants they are also symbols propositional variables are symbols hala very interesting that's why it is symbolic logic right hala logical constants are symbols but they do not change they do not vary don't change they don't change hala they remain constant बुझ पड़छ नै से माने constant हेक रहबे where in case of propositional variable their values can be changed से माने change हेई परिबे हला whereas logical constant change हेई परिबो नाही हला तो what are logical constants एई context रे तमे मन रखियो पड़िबो कोन पिले रे ना फर्स्ट रे implication तमे मन रखियो पड़िबो implication हला आ कोन मन रखियो पड़िबो ना conjunction then asila negation आ कोन मन रखे पड़िबो पिले रे alternation ए टर्मिनोलॉजी गुडा को वेरी इंपोर्टेंट तमे मन रखे पड़िबो alternation आ कोन ना equivalence नेक्स्ट असला कोन पिले रे ना disjunction 7 रे आसला कोन पिले रे ना ब्रैकेट्स 7 रे ब्रैकेट्स हला तो एति जिंस तमे ए सातटा जिंस मन रखे पड़िबो दे आर व्हाट लॉजिकल कांस्टेंट्स हला दे आर फॉर्म्स ऑफ व्हाट लॉजिकल कांस्टेंट्स बुझ पड़छ नै हला implications conjunction negation alternation equivalent disjunction brackets हला ए implication और सिंबल टा केमि पिले रे
ना एमटी उल्टा सी भलिया बुझ पड़छ नहीं हला देन तमर कंजक्शन सिंपली जस्ट ए डॉट नेगेशन हला गोटे सिंगल वेव तमर वेव भलिया राइट अल्टरनेशन तमर एमटी सिंबल रहउची इक्विवेलेंस थ्री पैरेलल लाइंस बुझ पड़छ नहीं तीनटा लाइन तळ तळ रहिबो हला देन डिसजंक्शन अल्टरनेशन और अपोजिट हला डिसजंक्शन एमटी रहिबो डिसजंक्शन दिस इज डिसजंक्शन ब्रैकेट तमर दिस वन हला ब्रैकेट देन जदि तमे केमते रिप्रेजेंट करिवो हला हाउ टू रिप्रेजेंट इन इंग्लिश ग्रामर हाउ टू रिप्रेजेंट these symbols in english what ना नॉर्मल सेंटेंस हाउ टू रिप्रेजेंट these what ना symbols जो सेंस रे पिले रे इफ देन जो सेंटेंस रे देखिबो इफ देन यूज्ड हेची इफ डॉट 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 देन डॉट 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 जो सेंस रे इफ देन कनेक्टिव यूज होईची से जगह रे तमे इंप्लिकेशन लगेबो राइट हला जो जगह रे एंड यूज हेची जो जगह रे एंड यूज हेची से जगह रे कंजक्शन लगेबो नॉट कोठी लागियो पिले रे नेगेशन केस रे नॉट लागिबो हला अल्टरनेशन केस रे केत कोन लागिबो पिले रे ना आइदर डॉट 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 और डॉट 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 लागिबो आइदर डॉट 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 और डॉट 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 हला आइदर और ए केसटा लागिला राइट हला अल्टरनेशन केस रे इक्विवेलेंस केस रे कोन ना इफ एंड ओनली इफ दिस इज वेरी इंपोर्टेंट इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ नेक्स्ट असला तमर कोन पिले रे डिसजंक्शन दिस इज व्हाट ना नॉट बोथ dot 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 and dot 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 hala these are connectives not both dot 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 and dot 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 then bracket which indicates the scope of the constants hala this is what indicates the scope of the constants indicates the scope of the constants so you have to remember this hala which portion are these you have to remember these seven logical constants implication conjunction negation alternation equivalence disjunction brackets hala implication can be represented by this symbol it is what if then conjunction and just a dot negation not like a web mark alternation either or like d equivalence if and only if three parallel lines disjunctions not both dot 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 and dot 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 ulta v brackets you know brackets it indicates the what scope of the constants बुझ पड़छ नहीं हला अच्छा सपोज हला गोटे एग्जांपल आमे नबा गोटे एग्जांपल नबा गोटे लेट p hala let a proposition be how much let a proposition be what p hala let p refers to there is rain p refers to what there is rain hala q refers to what na ground is wet hala ground is wet hala अच्छा there is rain वर्षा होची q ground is wet माटीटा ओदा हे जाइछ हला तो नेगेशन ऑफ p टा कोन हबो पिले रे नेगेशन एटा नेगेशन सिंबल नॉट यूज हेतला नेगेशन रे नॉट यूज होतला वेरी गुड करेक्ट हला कोन हबो ना p र अपोजिट कोन आसीओ पिले रे ना देयर इज नो रेन और देयर इज नॉट रेनिंग देयर इज नो रेन हला अपोजिट आसीला p आसीला देयर इज रेन नेगेशन ऑफ p देयर इज नो रेन हला लाइकवाइज नेगेशन ऑफ q कोन आसीबो the ground is not wet hala the ground is what not wet hala acha simply you can use anything जदि suppose p conjunction q मु देउची conjunction से केस रे कोड आस्ला रिप्ले conjunction and यूज हेतला right and so there is rain and ground is wet and the ground is wet the लगे दियो आर्टिकल लगेला बहुत से बुझी there is rain and the ground is wet p dot q p conjunction q so you can use p एते सेंटेंस लिखिबा बदल रे there is rain ट्रेडिशनल ला में बहुत गुडे लिखुथिले
है we are now modern students na we have to prefer modern logic बुझ पड़छनी in case of symbolic logic in replace of there is rain you can just put a symbol that is p refers to there is rain but you have to indicate that right p refers to there is rain so q refers to ground is wet negation of p tamane there is no rain negation of q ground is not wet p conjunction q this is conjunction p conjunction q conjunction माने and lagibo there is rain and the ground is what wet बुझ पड़छनी हला likewise what तमे कोन लगे परिबो अल्टरनेशन लगे परिबो p अल्टरनेशन q हला तमे लगे परिबो either there is rain either there is rain or the ground is wet हला सो माने जो सिंबल जगह रे जे जे माने कोन तमे लगे देबो कोन ना तार कनेक्टिव्स गुडा को तार लॉजिकल कांस्टेंट्स गुडा को बुझ पड़छनी हला तो एटा जेमति हला सेमति तमे p implication q दे परिबो p implication q if there is rain then the ground is wet so if dot थिला से dot बदल रे p लागिला हला dot पर p लागिला माने there is rain then dot थिला then the ground is what then the ground is wet if there is rain then the ground is what wet बुझ पड़छ तो सही हिसाब रे तमे कनेक्टिव यूज करिवो तो पिले रे आज बस सिंबॉलिक लॉजिक रो गोटे जस्ट माने कोन इंट्रोडक्शन देली आज हमें डिस्कशन कले कोन ना प्रपोजिशनल वेरिएबल्स आ गोटे हला लॉजिकल कांस्टेंट्स simply propositional variables are refers to the variables which are representing the propositions right in the place of propositions we can replace what variables push for the sake of simplicity for our what now हमको help करिवा पई हमर माने कैलकुलेशन करिवा पई आगु को हमें कोन करिवा ना ट्रुथ वैल्यू डिटरमाइन करिवा वैलिडिटी डिटरमाइन करिवा इन केस ऑफ symbolic logic you have to decide the validity of a certain proposition right you have to decide the validity of a certain argument hala so in that case it is very difficult to write the entire sentences the entire connectives for are you getting my point hala the entire argument it is quite difficult to write everything so in replace of that we have to use the symbols right for our sake of simplicity right hala so this is the basic purpose of symbolic logic so propositional variables I repeat in what in replace of propositions you will use variables those are known as propositional variables generally पिलरे author कहूची small p small q small r small s small t एगुडा सब यूज हुए in case of propositional variables logical constants तमर जो connectives गुडा को those are connecting the what propositions it may be and it may be not it may be either or it may be if then it may be माने कोन not both and right हला सो तमे सेडा देखिबो हला बुझपो छ नै बुक रु देखिबो तमे बुझी पारिबो हला तो आज पिले मु तुमको पढेली कोन दीटा जिंस मन रखिबो गोटे हला प्रपोजिशनल वेरिएबल आ गोटे हला लॉजिकल कांस्टेंट्स बोथ प्रपोजिशनल वेरिएबल आ लॉजिकल कांस्टेंट को यूज करिकि आमे केमती सिंबॉलिक लॉजिक को रिप्रेजेंट कले सेडा को माने कोन आमे आज डिस्कशन कले आई रिपीट पिले डिसेंबर 1 रु हमर लॉजिक रो पूरी एंटायर कोर्स स्टार्ट होची जो पिला माने बुझी परना हो लॉजिक यू कैन जॉइन अस गूगल मीट रे आमे क्लास करूछु weekly 4 days classes रहिबो only logic हला बुझ पड़छनी and what आ गोटे दिन तमरो एग्जाम रहिबो बुझ पड़छनी हमर पैकेज रहउची पूरा एंटायर not only for a month पूरा लॉजिक रो कोर्स पई only just what 3000 rupees it is a very small amount बुझ पड़छनी don't bother about money बुझियोची ना पिलारे सर्टिफिकेट रे गोटे थरा मार्क लेखा जीवो और से गोटे थरा मार्क ता 90 प्लस हबो बुझ पड़छ ना नै हला so that should be your aim बुझ पड़छ हला अच्छा again if you want to admit if you want to take admission in that course logic hala in our program then please contact to samsar 9090768267 you can also contact me myself Nitin sir 8249844231 my whatsapp number 8260074881 you can also mail us हमरो डिस्क्रिप्शन बॉक्स सब दे दिया जीवो theartsquare@gmail.com हला अच्छा ओके फॉर टुडे दिस इज इट थैंक यू